अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी which is the part of political science. But before starting political philosophy, आज हम इस लेक्चर में सिर्फ फिलॉसफी और इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे. And that is, in the light of this book, I recommend you all that before you start political philosophy or before you start philosophy, you have to understand its basic terms, its history, its branches, its definition, and the various philosophers which have played a tremendous role in its development. तो ये बुक कंपेनियन ऑफ फिलोसफी एंड लॉजिक बाय इद्रीस आज़ाद, ये एक इंतहाई इजी लैंग्वेज में लिखा गया किताब है. आप पहले इससे स्टार्ट ले सकते हैं. आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इसे पढ़ लें और फिर इसके बाद जो आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की कोर्स है वो सिलेबस के मुताबिक तैयार करें. अगरचे there are things which are not there included in the syllabus, but these are actually the base of the subject. तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ लें और इसको समझने की कोशिश करें. तो आप यहाँ देख लें, इट इज़ द कंटेंट्स लिस्ट. पहला चैप्टर हमारे साथ है इंट्रोडक्शन, और फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिलॉसफी, जो आज हम इस क्लास में थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे. फिर तीसरा चैप्टर है प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स, थेलस, पार्मेनिडस, पाइथागोरस, ज़ीनो. फिर प्री सोक्रेटिक जो फिलोसफीज़ है वो यहाँ पर दी गई है. और फिर चैप्टर नंबर 5 में हम सोक्रेटिस से स्टार्ट करते हैं. तो ये जो पहले 4 चैप्टर्स है, एक्चुअली दिस इज़ द बेस ऑफ द सब्जेक्ट फिलॉसफी. तो ये वहाँ सिलेबस में नहीं है. वहाँ पर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट करते हैं. तो उन इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए और फिर सोक्रेटिस की फिलॉसफी को समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड प्री सोक्रेटिक फिलॉसफीज, फिलोसफर्स एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिलॉसफी. अच्छा, फिर सोक्रेटिस के बाद प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, फिर यहाँ पर मिडिवल फिलॉसफी. वहाँ पर सिलेबस में ग्रीक फिलॉसफी है, पहले एंशंट, और फिर बाद में हम मॉडर्न फिलॉसफी की जानिब आते हैं जो मैकियावेली से हम स्टार्ट करते हैं. और बीच में ये मिडिवल फिलॉसफी हम नहीं पढ़ते, वहाँ सिलेबस में ये नहीं. लेकिन मिडिवल फिलॉसफी को भी समझना ज़रूरी है. ये जो स्टेप वाइज एवोल्यूशन इसकी हुई है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट आ रही है, तो हम यहाँ पर मिडिवल फिलॉसफी भी है. फिर मुस्लिम फ़िलासफ़ी में जो आपके सिलेबस में वेरियस फिलोसफर्स है वो यहाँ पर भी है. मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, फिर यहाँ पर रेने डिस्कार्टे, इसहाक न्यूटन, और फिर और भी बहुत से फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट इवन यहाँ पर है. हेगल है, डार्विन है, मार्क्स है एंड सिगमंड फ्राइड. फिर यहाँ पर जो फिलॉसफी से रिलेटेड वेरियस स्कूल्स है, वेरियस फिलॉसफीज फर्दर यहाँ पर है, लाइक रैशनलिज्म एंड एम्पेरिसिज्म, ये भी यहाँ पर है. और फिर आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, मार्क्सिज्म, और यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी लाइक एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इथिक्स, लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. और फिर यहाँ पर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक. लॉजिक समझे बगैर आप फिलॉसफी नहीं समझ सकते. फिलॉसफी में जो टूल्स यूज़ होते हैं, one of the basic tools, or even you can say the instrument, is logic. तो लॉजिक क्या है, यहाँ पर भी वो दिया गया है. ब्रांचेस ऑफ लॉजिक है यहाँ पर.
और फिर fallacies वेरियस वो दी गई है. तो this book is highly recommended for the beginners, even for those who have already studied political philosophy और philosophy, तो वो भी ये पढ़ सकते हैं. जनरली philosophy के लिए हमारे पास जो वेल ड्यूरेंट द स्टोरी ऑफ philosophy है वो बुक हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो काफ़ी हीवी बुक है. और मेरे ख्याल में बिफोर रीडिंग दैट बुक वी हैव टू रीड दिस वन to understand the basic concepts. So this was about the companion to philosophy and logic, and now we are coming towards our topic, that is philosophy. Actually, in political science, we study political philosophy. But before understanding political philosophy, we must have to understand what philosophy is. So, literally, philosophy is the combination of two Greek words. अगरचे Latin में भी ये words use हुए हैं. There are two Greek words, pelo and sophia. Pelo means love and sophia means wisdom. So philosophy literally means love for wisdom. Love for wisdom is the literal meaning of philosophy. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लव फॉर विजडम का क्या मतलब है और फिलॉसफी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. अच्छा, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, philosophy is the critical examination. Philosophy is the critical examination of the grounds for fundamental beliefs and an analysis of the basic concepts implied in the expression of such beliefs. Implied in the expression of such beliefs. This definition has been given by the Encyclopedia of Britannica. अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर फिलॉसफी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर फंडामेंटल बिलीफ्स. जो भी बुनियादी बिलीफ्स, थिंकिंग, अकायद वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में है, तो इसका एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना और इसका एनालिसिस करना. ये जो बुनियादी बिलीव्स के बारे में फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो इसके ग्राउंड्स है, जो इन बिलीव के एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन चीज़ों के बारे में सवालात पूछना और फिर रीजनिंग की बुनियाद पर उनका जवाब देना, इट इज़ फिलॉसफी. इसे फर्दर हम इस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं कि फिलॉसफी इज़ एक्चुअली the study or science of causes and reasoning. जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं
या जितनी भी बिलीव्स है जो अभी तक प्रूव नहीं है, उनका रेशनैलिटी की बुनियाद पर एक्सप्लेनेशन करना, उन क्वेश्चंस की आंसर ढूंढना इज़ फिलॉसफी। एक्चुअली जब हम इल्म के मुख्तलिफ मदारिज के बारे में बात करते हैं तो इन द प्री हिस्टोरिक टाइम men only thought in terms of religion, and they didn't imply their reason. With the passage of time, men learned to use their mind and to question various beliefs which were previously considered as not to question. तो उन क्वेश्चंस का फिर रेशनल या अक्ल की बुनियाद पर जवाबात तलाश करना, इसे हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, नाउ इट इज जनरली accepted that the earth is round, though no one has seen that the earth is round, still we accept it. In the beginning, there were people who believed, and even now, today, people believe that the earth is flat. Certain people questioned that can the earth be flat or round? Now, to find the answer of these questions, before science, there was philosophy, and there were philosophers even who had indicated various signs for it. तो फिलॉसफी का मतलब ये हुआ। जनरली जब हम एक सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं कि द फलान पर्सन इज़ PhD इन दिस सब्जेक्ट, तो जब हम नॉलेज के मुख्तलिफ मदारिज तय करते हैं तो जो पीक पर जाते हैं, तो एक्चुअली एवरी स्कॉलर इज़ अ फिलोसोफर बिकॉज ही इज़ अ रिसर्चर in their specific field. And even layman can be philosopher if he questions various phenomenon or established practices or beliefs and can reasoning over it. But certain people are known as philosophers. They become philosophers who contribute to the mainstream knowledge of the world about the world. So this was about the definition and introduction of philosophy. फिर भी अगर आप क्लियर नहीं है इस पर तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ ले। आई विल ट्राई टू क्लियर इट टू यू पीपल। अच्छा, तो फिर यहाँ पर एक दूसरी ज़रूरी बात ये है कि वी लर्न दैट फिलॉसफी deals only with unanswered or unsolved questions and problems always, and most of them are usually commonly accepted beliefs. मतलब ये हुआ कि जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, जो पुजल्स सॉल्व हो जाए, तो फिर वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट नहीं रहता। फिलॉसफी का सब्जेक्ट वो क्वेश्चंस या कॉमनली एक्सेप्टेड बिलीव्स है जिसके बारे में अभी भी सलूशन नहीं आई। Similarly, every discipline of academic knowledge becomes philosophy at its higher level. We already have discussed this point. अच्छा, अब हम थोड़ा philosophy as a discipline of knowledge की बात करते हैं। तो as philosophy is a very broad subject and its scope is very wide, therefore it is divided into various branches. What are these branches? इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर। अच्छा, तो जो मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है, इनमें हमारे पास फर्स्ट वन इज एपिस्टेमोलॉजी।
The second one is metaphysics. The third one is logic. The fourth one is ethics. And the fifth one is philosophy of science. And the sixth one is philosophy of religion. And there can be various aspects of philosophy like political philosophy, legal philosophy, moral philosophy, and so on. Acha. So generally, we discussed it that philosophy is actually the science to find the answers of various questions about the nature of the universe, about the nature of morality, about the nature of those standard practices, about the nature of nature, about the nature of knowledge, and so on. Philosophy is actually questioning things, phenomenon, and beliefs. So, up as it is very broad subject and its scope is very wide, so we divide it into various branches, and the first one among these is epistemology. Now, what is epistemology? Epistemology has its origin from the Greek word episteme, meaning knowledge, and logos, meaning study. So, it is the knowledge of knowledge. Epistemology is the study of knowledge. And further, we study various types of knowledge, how a discipline become knowledge. So, it is epistemology. It also deals with the magnitude of knowledge that a human mind can encompass, how and how much the reasoning, senses, testimonials, and other sources could be used in acquiring true knowledge. Uh, One major objective of epistemology is to set criteria for knowing that what could be known and what could not be known. But interestingly, the very question about knowledge is itself purely metaphysical. तो ये फिर हम मज़ीद जब इसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे. इस लेक्चर में it is enough that of episteme means knowledge and logi means study. तो ये डील करती है कि knowledge बेसिकली क्या है. दूसरा जो मेटाफिजिक्स है, फिजिक्स यहाँ पर means physical things which we can observe, we can see through our senses, and meta means beyond physical which are not observed through our senses. तो ये हुआ metaphysics. Metaphysics expresses itself as something beyond physics, so it is knowledge beyond the physical laws. More clearly, metaphysics is the knowledge of something above the nature. However, the question of what comes above nature is itself metaphysical, therefore cannot be answered with normal phrases. It deals with two fundamental questions: what is the nature of reality and what is the reality of nature. Further, it deals with existence, essence, etc. हाँ, अच्छा, फिर हम आते हैं लॉजिक की तरफ. तो लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर philosophy. With philosophy, logic is the branch of philosophy, but it is widely used in almost all branches of natural and social sciences and mathematics as well. It is actually the knowledge about our speaking and our saying, our argumentation. It is the science of argument evaluation, validity and invalidity of arguments. Further, it is divided into deductive logic,
and inductive logic. फिर ethics है, तो ethics has its roots in the ancient Greek word ethicus, meaning habit or custom. It is a branch of philosophy closely related to the branch of philosophy closely related to the branch of ethics is axiology. Axiology is the branch of philosophy that combines ethics and aesthetics. Axiology combines ethics and aesthetics. तो यहाँ पर आप देख ली कि aesthetics भी आ गई. Moral philosophy या ethics basically attempt to propose a mechanism to define good conduct on a rational basis. It is the science of ideal human character. Ethics is the science of ideal human character. It is the science of what could be good, what could be bad, what could be the standard of good and bad. So this is ethics. It is further divided into areas like meta-ethics, normative ethics, applied ethics, etc. अच्छा, और फिर हम लास्ट में आते हैं फिलोसफी ऑफ साइंस की तरफ. तो साइंस एक जदीद जेनर है ऑफ नॉलेज, लेकिन इस साइंस की भी फिलोसफी है. एक्चुअली इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ फिलोसफी. और फिर मुख्तलिफ साइंटिफिक फिनोमिना को हम फिलोसफी की एंगल से किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. इट इज़ द फिलोसफी ऑफ साइंस. In fact, we cannot dissect these two. To be a good scientist, one must be a good philosopher first. अच्छा, और फिर लास्ट में हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन की तरफ आते हैं. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन. तो यहाँ पर जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है ऑफ रिलीजन अबाउट गॉड, about the nature of universe in religion, तो इनको philosophy की एंगल से एक्सप्लेन करना is actually philosophy of religion. It discusses religious ideologies, the concept of God, nature and knowledge of God. So this was our introductory lecture. Here we discussed only what is philosophy and what are the various branches of philosophy. In our next lecture, inshallah, we will discuss the history of philosophy, कि ये कहाँ से शुरू हुई और मुख्तलिफ फेजेस से किस तरह गुजरी, मुख्तलिफ न्यू फिलोसफिक आइडियाज़ किस तरह ज़हूर हुई. तो इनके बारे में हम इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और फिर वहाँ पर हम कोशिश करेंगे टू कनेक्ट इट विद पॉलिटिकल फिलोसफी. थैंक यू वेरी मच.